So we had entered this new financial year 2018 and India had seen certain ups and downs in the previous financial year with respect to the economy as well. But how will the journey be in the financial year 2018 is interesting as the reform-oriented decisions and implementations tend to dominate the face of Indian economic growth amidst global growth prospects still showing only mild signs of recovery. Let's have a look at this report. India has witnessed many twists and turns in the economic story in the financial year 2017. Demonetization has been one of the major decisions in the last financial year. Indian economy stood strong and resilient to any negative effects of demonetization. Though it was not a cakewalk with respect to growth, Indian economy stood as a bright spot in the gloomy global economic prospects. Analysts and experts believe that financial year 2018 will be positive for Indian economy, though there are certain challenges. Finance Minister Arun Jaitley says that Indian economy is poised to grow at 7.7% in FY 2018. He says the country needs $646 billion over next few years to finance infrastructure development, which is the key for growth. Arguably, the global growth is showing certain positive signs and moving upwards and is likely to improve further in 2017-18, which is certainly a positive sign. Rating agencies are also optimistic about Indian economic growth story. CRISIL says India Inc.'s revenue growth driven by consumption will hit a 5-year high of 8 to 9% in fiscal 2018. Rating agency Fitch said Indian economy will grow by 7.7% in 2017-18. These agencies say that the pent-up consumption demand is likely to support growth post-demonetization. However, ample headroom in capacity utilization, stretched balance sheets and just a moderate pickup in demand will mean the revival in the private sector investment cycle would get deferred to fiscal 2019. However, there is also a belief that investment cycle will be revived as the much-anticipated GST regime will kick-start from this financial year. Of course, how well the GST is implemented and how companies react during this period has to be observed, as this will also have a bearing on corporate earnings. Meantime, the credit quality of India Inc. is showing signs of gradual recovery driven by firm commodity prices, stable macros, impact of sustained structural reforms, improving capital structure and lower interest costs. On the other side, analysts feel the major challenge for the economic growth prospects will be in the form of monsoon. Initial forecasts suggest monsoon rains will be below normal. On the whole, many analysts are expecting an acceleration in the GDP growth in the next few years, and government has also been spelling out its intention to grow faster to about 8% over a sustained period of time. Bureau Report, DD News. So we have with us Mr. A.K. Bhattacharya with us to discuss on this. Sir, the first question, sir, how are you looking towards the financial year 2018 from the cues which we take from the previous financial year? Well, three big points that I think all of us who are watching the economy should be mindful of. One, I think this is going to be the year of the GST because GST will roll out, whether it is in July or September is a matter of debate. But GST is going to change the way Indian businesses operate, Indian traders operate, and Indian consumers react to them. And I think there may be some disruption in the early days because there is a new system. But at the end of the entire experiment, maybe in the next 3 months or so after the rollout, my sense is the overall impact of the GST will be positive. The second big thing, which your report also referred to, is the impact of the monsoons. True. Now, there are estimates, there are forecasts that estimates of water shortage already being sensed in various parts of the country. Monsoon forecast is that it may not be as good as in the previous years. So, therefore, its impact on earnings, reserves, surplus earnings with the rural India will be negative. The third thing is the world continues to sort of be more protective and Brexit impact will start being felt in the latter half of the current year and the US market is picking up. And the good thing, in my view, is in the middle of all these GST, monsoon, and deglobalization of sorts, is that non-oil commodity prices are going up, which is a good sign for India's exports. True.
our oil imports, will remain benign because of the oil prices are still hovering between $50 and $52 per barrel. But whereas other commodity prices are seeing an uptick. Now, the net impact of this would be India's exports, which have already seen some healthy rise in the last couple of months, probably will see a recovery. And this is an opportunity for the Indian industry to reclaim that position which they had done in the global export market. So it's a mixed picture. New experiments in GST with tremendous possibilities, upside to GDP over the next couple of years, but the challenges coming from monsoon and an uncertain world globally. भट्टाचार्य जी, जो आपने फैक्टर्स की चर्चा की, उसके अलावा जो हम देख रहे हैं ये कि 2017 फाइनेंशियल ईयर जो था वो 5 ईयर प्लान का एंड था. करेक्ट. एक नए साल में हम जा रहे हैं जिसमें 5 ईयर प्लानिंग नहीं है. ये जो नया बजट इस बार सरकार ने दिया है, खर्चे जो हैं अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे. जल्दी ही बजट जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा. प्लान नॉन प्लान का अंतर खत्म हो गया. ये जब जो नई चीज़ें हैं, नए माहौल हैं, उसका इकोनॉमी पे आप क्या असर देखा? ये आपने अच्छी बात कही. जो प्लान और नॉन प्लान का जो अंतर खत्म हो गया, उससे जो एक्सपेंडिचर का जो एक फ्लो होता है, उसमें जो बाधाएं आती है कि भाई ये प्लान है, नॉन प्लान है, यहाँ पे मत करो, वहाँ पे मत करो, वो खत्म हो गई हैं. तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट मनी और बजट ऑलरेडी पास हो गया है, प्रेसिडेंट साहब ने भी उसको पारित कर दिया है. तो फ्रॉम टुडे मिनिस्ट्रीज आर फ्री टू स्पेंड देयर मनी. उससे ज़रूर जो पहले जो बैकलोडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर और पैसे वापस जाते थे मिनिस्ट्री में, वो कम होंगे. करीबन मान लीजिए 10 से 12% जो सरकार बजट में पिछले कई सालों से देती है, वो पैसे मिनिस्ट्री को वापस आ जाते हैं सरकार के पास, क्योंकि वो खर्च नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार ने फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर के सीमा तय कर दिए हैं कि भाई फर्स्ट क्वार्टर में इतना खर्च करना पड़ेगा. तो ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वार्टर में खर्चा नहीं होता, तो वो खर्चा वापस चला जाता है. तो वो एक बहुत पहला बड़ा इजाफा होगा देश की अर्थनीति के लिए, क्योंकि वो सरकारी जो पैसा है वो खर्च हो जाएगा और जिस काम में दिया गया है. दूसरा बात जो ये होगा कि जो स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स का जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में पैसे कम हो गए हैं, तो स्टेट की जो फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत हमें क्लोजली वॉच करनी है. ऑलरेडी स्टेट की जो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2.8% हो गई है. 3% का आसपास. तो और उदय का इम्पैक्ट देखेंगे, अगर 7th पे कमीशन का जो इम्पैक्ट होगा, उससे मुझे लगता है कि सेंट्रल फाइनेंसेस से मुझे कोई चिंता नहीं हो रही है, पर स्टेट फाइनेंसेस से ज़रूर चिंता हो रही है, क्योंकि स्टेट फाइनेंसेस लगता है मुझे कि उसमें जरा मतलब काफ़ी लैक ऑफ अटेंशन है. तो मोटी बात में कि नई साल में नया एक्सपेंडिचर पैटर्न, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपने बात नहीं कही कि एक नया टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल इनकम टैक्स में भी आ रहा है, जहाँ पे जो आम आदमी जो है उसकी जो टैक्स बर्डन है इस साल में घट गई है बहुत, और जो 50 लाख से ऊपर इनकम वाला है उसकी टैक्स बर्डन बढ़ गई है. तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश जहाँ पे $1500 की जो पर कैपिटा इनकम है, ये जो टैक्स सिस्टम जो है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए. और इसका ये सूचना जो इस साल में नया हो रहा है, इसको हमें वेलकम करना चाहिए. और सर, जो हमने देखा कि बीते साल में पूरे साल काले धन के खिलाफ एक के बाद एक कदम जो उठाए गए, इस साल लगता है कि वो कदम और भी सख्त होंगे. बेनामी प्रॉपर्टी पे अगला प्रहार जो वो होगा, और काले धन के खिलाफ जो मुहिम है, इस इकॉनमी को और भी क्लीन बनाने की, ट्रांसपेरेंट बनाने की जो कोशिश है सरकार की, वो इस साल और ज़्यादा मजबूत होगी. 2-3 इंडिकेशन आ रही हैं. एक तो है, देखिए, जो कैश का जो ट्रांजैक्शन का जो लिमिट जो था 3 लाख जो बजट में बताया गया था, 2 लाख कर दिया गया. जी. तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि अगर आप कैश में उसको इतना 2 लाख जैसे खर्चा कर रहे हैं, तो उसका आप क्यों नहीं आप डिजिटल ट्रांजैक्शन या चेक ट्रांजैक्शन जो अकाउंटेड हो सकता है वो नहीं करेंगे. इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की जा रही है, वो मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज़ अ गुड वे ऑफ फंडिंग इलेक्शंस. हालांकि फंडिंग इलेक्शंस
और दूसरी बात यह है कि आप जो डिजिटाइजेशन जो कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि जो फोकस जो पहले था डिजिटाइजेशन में वो थोड़ा कम हुआ है। उसमें मेरे ख्याल से हम आशा ये कर सकते हैं कि और भी प्रेशर है, क्योंकि लोग वापस कैश में जा रहे हैं। अगर जनवरी फरवरी की अगर आप आंकड़े देखें, थोड़ा लग रहा है कि लोग वापस कैश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि रिमोनेटाइजेशन भी का जो पेस जो है बढ़ गया है। और आपने जो बेनामी लॉ की बात कही, वो बेनामी लॉ का जो एनफोर्समेंट है वो करना पड़ेगा। उससे काफ़ी वो चैलेंजेस आएंगी मेरे ख्याल से। स्टैम्प ड्यूटी है, रियल एस्टेट स्टैम्प ड्यूटी और बहुत बड़ा एक मुद्दा है, पर वो सेंटर के हाथ में नहीं है, वो स्टेट्स के हाथ में है। मेरे ख्याल से एक ऑल स्टेट कंबाइंड अगर मीटिंग हो सके, जिससे कि जो सेंटर स्टेट्स को कह सके कि भाई ये स्टैम्प ड्यूटी कम करने से आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, ज़्यादा लोग इस टैक्स नेट में आएंगे, कम टैक्स पे करेंगे और ओवरऑल इनकम ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, जो टैक्स बेस वाइडन हो जाएगा। Well, Mr. Bhattacharya, now coming to certain aspects with respect to the economic growth itself, is one major point is manufacturing. The manufacturing growth has been, it was like a roller coaster ride for manufacturing growth in the last financial year. We've seen certain times the manufacturing growth was up in 1 month and the other one. But then overall, if you look at it, the growth is not that, sustaining. It's not, there is no consistency in it. And also this Make in India campaign. How do you think this is, showing giving some sort of positive results from the manufacturing growth point of view? Because as of now, we are not actually, looking towards such great results. Well, I mean, the manufacturing sector is still is a big challenge because, and there are reasons also. Investments haven't really picked up. True. And actually, if you look at the quarterly data of GDP data, you see on quarter, investment rate has declined. Absolutely. So now this is a major area of concern, and for which I hold the twin balance sheet problem as a main culprit, which is on the one hand you have got many Indian companies who are indebted, leveraged, and those debts cannot be cleaned up because banks are a little reluctant to take the haircut and take a decision to sell the thing. Recently, some moves have been taken by getting RBI into the picture and forcing banks to take those decisions so that companies are deleveraged and they are free to take certain decisions which they are not able to take because of their hugely leveraged positions. Now, that is one way of tackling so that the animal spirit of the India Inc. can be freed up a bit, so that they can invest. And the second thing is the banks will have to reduce their non-performing assets so that they are free to lend money to bankable projects. True. Finally, what we need to understand is that in the globally and as well as in India, we are seeing the rise of what we call the share economy. And in the share economy that you can see is that the existing assets are already being used in different ways. I mean, thanks to technology, you have the app-based technologies. So everything that is already existing in a system is being used several times more without the need for adding to the capacity. So what you are seeing is that you don't probably need more cars to be bought, but you have got the car sharing apps which are allowing people to use the existing pool of cars. The same thing is with the hotels. Companies like Airbnb, that actually are actually a dampener for fresh investment in hotel properties because already existing infrastructure is being used, and that is the rise of the share economy. So I think investment and manufacturing are going to continue to face a major challenge, and it will take some time before the manufacturing puzzle or manufacturing challenge can be met squarely. My sense is that it is better, probably more wise to focus more on our services sector, and probably India will be the first such case where instead of achieving great heights in manufacturing, we will become a bigger economy riding on the services sector. Let's slip into a short commercial break. After the break, we'll be coming back and then continue the discussion. Also take the questions which you send on the social networking handles. Stay tuned.
Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. We are discussing about the financial outlook for the financial year 2018 and the Indian growth prospects. We have Mr. A.K. Bhattacharya with us to discuss on that. So before the break, you were talking about the investment revival as well. Now, the private investments is a major challenge too. Yeah. Now, with the current situation, in fact, certain analysts say that, in fact, the hopes of revival of private investment cycle should be deferred to 2019 as well. Like, would you go based on that? No, I'm not going to make any prediction of that sort, but certainly private investments are not going to see any pickup in the next couple of years. There's no doubt about it, which is why, as you have noticed, that the government is taking the necessary steps to bring in capex from its side. I mean, the budget that was presented on February 1 did increase the capital expenditure from the government side. Only 2 days ago, the government has actually asked for $3 billion of investment from the new Bank of India, new international bank. So now I think there's a tremendous demand for investment in the infrastructure sector, which will be a trigger for investment in the manufacturing sector as well, because if you see infrastructure going up, then actually the demand for the manufacturing sector also should go up ideally. So therefore, I think government has sensed that the private sector is not in a position to invest, and therefore probably government investment can crowd in private investment. But making it lucrative. Now, we've seen in government almost going for 3.95 lakh crores of investment in the infrastructure, in fact, from the budget point of view as well. Doesn't it give some sort of confidence for the private players, if not in India, even at the abroad, to look at Indian infrastructure story, the space to be actually on a growth trajectory than, on the declined one? Well, I mean, I would not say that the efforts that have been made have not borne any fruit. There have been a surge. There is a surge in investments. If you look at the FDI figures, they are rising. It's a different matter that much of the FDI is coming into share purchases and not necessarily creating new capacities, greenfield capacities. But the trend is positive. Infrastructure improvements, they do have chain effect, positive chain effect on the manufacturing sector investment, but it's not something that happens. You invest in infrastructure today, and tomorrow you see the results. So it is a time-consuming process, and so you cannot see the results of it maybe in this year or next year. But surely the last couple of years. Revival in infrastructure investment, I mean, if you see that from the number of kilometers of roads that are being built per day is now 19 kilometers. It may not have met the target that was originally set, but there was improvement. But definitely a clear improvement. Sure. So I think that this creates jobs. If you look at the power sector, the distribution sector particularly is looking better because of the Uday scheme. True. But the real challenge would be how you actually make sure that the power that you produce
is actually used up Absolutely. through the distribution channels. True. Because right now the distribution companies are not in good financial health, and probably Uday will help. So there are many other issues that are actually coming in the way of fresh investments, and we have seen some moves, but I think more needs to be done. Absolutely. We're getting certain questions from the social networking handles as well, Mr. Bhattacharya. Let's take those questions. Our first question on our Gmail handle. Let's quickly have a look at that question on our Gmail handle. Let's take the questions on our Gmail handle. This will be this is the first question. What will be GST effect on Indian market after 1st of July? Arun Saini. Mr. Bhattacharya. Well, I think first of all, it will from the company's point of view, it will be easier to administer their taxes. It will be easier for them to pay up those taxes. Registration will be as long as you are operating in, let's say you are operating in 4 states, so you have to be registered in 4 states. True. And once you are done, everything is digitized, and the set-offs, the credits, everything is there. There is a 90-day, 180-day period given there. The rules are still being framed. The big news would be when the rates are actually fixed. True. The understanding that we have got so far from the government is that the new GST rates would be more or less in line with the existing ones. True. The idea that I get, and I think in answer to this question, is that in terms of rates, there won't be much of a change, but in terms of set of benefits, there will be a lot of benefits. In the first 3 months after July 1, businesses and traders can see some upside on their revenues, and but I don't know whether this will result in immediate price cut. True. Because it takes time before actually the benefit of tax cut is passed on to the consumers. Consumers, true. The interesting message from all that has happened and likely to happen is that the idea is to reduce the extent of disruption that any new system True. brings about. So all the changes that are being proposed are being introduced in a manner that they cause the least disruption. So therefore, you will probably it's a good policy to not stir it up beyond the government's ability to manage it. True. So I would not be worried, but there will definitely be some disruption. सर हमें रुकना पड़ेगा, शायद सीज़फायर वायलेशन हुआ है सीमा पर। सीधे चलते हैं संजीत खजूरिया जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जम्मू से। संजीत जी, क्या अपडेट है, ये कब हुआ ये मामला, और क्या कुछ अभी अपडेट है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही, तकरीबन आधा घंटा पहले ही समाचार मिला है कि पुंछ के दिगवार क्षेत्र में वहां पे पाकिस्तान ने सीज फायर की उल्लंघना की है और जबरदस्त गोलाबारी शुरू की है। हालांकि पहले छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, और अभी ये भी पता चला है कि मोर्टार भी दागना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल भारतीय सैनिकों ने भी उसका माकूल जवाब देना शुरू कर दिया है, और जो हमारे पास समाचार मिला है उसके मुताबिक अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। बहरहाल चौकसी बढ़ा दी गई और भारतीय सैनिक जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और कल जब से प्रधानमंत्री ने सीमा पार का उल्लेख किया, उसके बाद में शायद ये दूसरी घटना है इस तरह की। संजीत जी, बिल्कुल ठीक है। हालांकि कल प्रधानमंत्री का यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा था, उन्होंने यहाँ टनल का उद्घाटन किया और उस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने कहा कि किस प्रकार हमारे यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की गड़बड़, और आज ही पाकिस्तान ने फिर शुरू किया है। हालांकि 2 दिन पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की थी यहाँ इसी क्षेत्र में, लेकिन हमारे सैनिक जो है वो बड़ी चौकसी के साथ काम कर रहे हैं। Well, thank you, Sanjit, for संजीत, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से आपकी कुछ बात हुई है, और ये हमला कब से जारी है, और क्या अभी गोलाबारी रुक गई है या फिर अभी भी जो जवाबी कार्रवाई है भारत की तरफ से वो जारी है?
नहीं, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही है। एक्चुअली जब फायर शुरू होता है तो वो कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुक रुक के फिर वो चलता रहता है, लेकिन अभी इस वक्त जो ताज़ा समाचार मिला है काफी जोरदार गोलाबारी हो रही है, काफी मोटा जो है वो भी पाकिस्तान ने शुरू कर दी है दागना, और जो भारतीय सैनिक है उसका माकूल जवाब देते हैं। अगर उनकी एनर्जी या तो उसकी गन छोटे उससे फायरिंग होती है तो भारतीय सैनिक उसी जो है स्तर के हथियारों का जवाब देते हैं, और मोर्टार जब दागता है पाकिस्तान तो मोर्टार की जवाब दिया जाता है। बहुत शुक्रिया संजीत खजूरिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीमा पार का उल्लेख करते हुए कहा कि हम विकास करके दिखाएंगे और जो सीमा पार रह रहे लोग हैं उनको विकास के जरिए जवाब देने की कोशिश करेंगे, और जो कश्मीर के नौजवान हैं वो टूरिज्म को एक तरह से चुनाव करें, टेररिज्म को नहीं। और उसके बाद हमने ये देखा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और उसका जो मुंहतोड़ जवाब है वो फिलहाल दिया जा रहा है। कुछ हमारे पास और भी सवाल आ रहे हैं इकॉनमी टुडे में, जो अगला वित्तीय वर्ष है उससे जुड़े हुए जीमेल के जरिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या कुछ प्रायोरिटीज़ होने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के कॉपरेशन को लेकर के? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें 2017-18 जीएसटी का जिक्र आप कर चुके हैं, इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं भट्टाचार्य जी जहाँ पर काम कर सकते हैं? पहला जो काम कर सकते हैं वो जो प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी, ये या फिर पूरी जो लैंड लीजिंग पॉलिसी है उसमें कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने जो कहा कि जो स्टेट लेवल का जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए जो बजट में एक इंडिकेशन दिया गया था कि एक नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स पेयर का जो एग्रीकल्चर इनकम होगा वो इनकम टैक्सेबल होगा। तो मुझे लगता है कि टाइम हैज़ नाउ कम वेयर एग्रीकल्चर जो रिच फार्मर का जो टैक्सेशन, और ये स्टेट का सब्जेक्ट है। अच्छा। कि शायद स्टेट के साथ बात करें, क्योंकि ऐसे जो हमारी जो टैक्स जो बेस जो है बहुत नैरो है। तो अगर टैक्स बेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जो 3 to 4% जो रिच फार्मर्स हैं वो टैक्स नेट से कैसे अंदर आ सकें, वो मेरे ख्याल में स्टेट का शायद जो बात जो है वो स्टेट के साथ बात कर सकते हैं। और बड़ी बात जो आपने कही कि स्टैम्प ड्यूटी या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में जो कुछ सुधार होने हैं उसके संकेत कुछ खबरों में आना शुरू हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्टैम्प ड्यूटी को एक तरह से कम किया जा सकता है, तो शायद जो संकेत हैं वो बेहतर हो सकते हैं। फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार देख लेते हैं कि बाजारों का क्या हाल है इस वक्त। Well, Indian market is up by almost 131 points, around 137, around 29,758 levels. So Indian markets are trading on a positive note. Nifty also showing similar trends, up by almost 200 points, still holding that 9,200 psychological mark, around 9,202 levels. So those are the updates of Indian markets at this moment. So, that's all in Business Morning and Economy Today. Stay tuned to DD News for other updates. Thanks for watching. Namaskar. Namaskar.